Hello kids, today we are going to read and repeat reading comprehension. Let's start. The busy ants. In the garden, many ants were carrying food to their home. Some ants carried crumbs. Some carried seeds. They worked together all day. By evening, they had a big pile of food for the winter. बगीचे में कई चींटियां अपने घर के लिए खाना ले जा रही थी। कुछ चींटियां टुकड़ों में खाना ले जा रही थी। कुछ बीज वे दिन भर साथ काम करती। शाम तक उनके पास सर्दियों के लिए खाने का एक बड़ा ढेर जमा हो गया। Now your turn, kids.
Good job. Now let us answer the following. Where were the ants? चींटियां कहाँ थी? Answer is garden यानी बगीचा. Name one thing the ants carried. चींटियां जो एक चीज ले जाती थी उसका नाम बताइए. Answer is crumbs of seeds. टुकड़े या बीज. Why did they collect food? उन्होंने खाना क्यों इकट्ठा किया? Answer is for the winter. सर्दी के लिए. The kite in the sky. On Sunday, Aman and his sister Zara went to the park. Aman flew a red kite with a long tail. The wind was strong and the kite flew high. Sarah laughed and clapped as the kite danced in the sky. रविवार को अमन और उसकी बहन ज़ारा पार्क गए. अमन ने एक लंबी पूंछ वाली लाल पतंग उड़ाई. हवा तेज थी और पतंग ऊंची उड़ी. ज़ारा हंसी और तालियां बजाई जब पतंग आसमान में नाच रही थी. Now your turn, kids.
Good job. Now let us answer the following. Who went to the park? पार्क में कौन गया? Answer is Aman and Zara. What color was the kite? पतंग का रंग क्या था? Answer is red, यानी लाल. What did Zara do when she saw the kite? Zara ने पतंग देखकर क्या किया? Answer is laughed and clapped. हंसे और तालियां बजाई.